अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, केमिकल टॉक की तरफ से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज से एक न्यू सिलसिला शुरू करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल के बारे में, और इसकी इंशाल्लाह 1000+ MCQs विद डिटेल हम कवर करेंगे। आज इस सिलसिले का पार्ट नंबर 1 है। जिन व्यूअर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इन व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाले आइकन को भी लाजमी क्लिक करें। इसका ये फ़ायदा होगा कि मैं जितने भी वीडियोस अपलोड करता जाऊँगा उनकी नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी। और वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी किया करें, और जहां पर कोई गलती आपको मालूम हो तो कमेंट्स लाजमी किया करें ताकि मैं इसकी करेक्शन कर लिया करूं। तो शुरू करते हैं इस सिलसिले का पार्ट नंबर 1। व्यूअर्स, MCQs नंबर 1 to 5 हमारे पास स्टैटिक करेक्टरिस्टिक्स और डायनामिक करेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड हैं। तो व्हाट इज़ स्टैटिक करेक्टरिस्टिक? The set of criteria defined for the instrument which are used to measure the quantities which are slowly varying with time or mostly constant। कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जो कि हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ की पैमाइश के लिए यूज़ करते हैं, तो वो क्वांटिटीज़ अगर हमारे पास स्लोली वेरी करें टाइम के हिसाब से या मोस्टली कांस्टेंट हो, तो वो हमारे पास कौन सी करेक्टरिस्टिक कहलाएंगी? स्टैटिक करेक्टरिस्टिक्स कहलाएंगी। जैसे कि हमारे पास मेन स्टैटिक करेक्टरिस्टिक्स हैं, एक्यूरेसी है, प्रिसीजन है, रिजोल्यूशन और डिस्क्रिमिनेशन, सेंसिटिविटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, ड्रिफ्ट, स्टैटिक एरर, डेड जोन, थ्रेशोल्ड, लीनियरिटी, स्टेबिलिटी, रेंज और स्पैन, tolerance, bias and hysteresis। What is dynamic characteristic? The set of criteria defined for the instrument which are changes rapidly with time is called dynamic characteristics। जब भी हमारे पास कोई भी क्वांटिटीज़ है जो रैपिडली चेंज हो जाए विद टाइम, तो उसे हम क्या कहते हैं? डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। मेन डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन इंस्ट्रूमेंट आर स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स, डायनामिक एरर, हमारे पास टाइम लैग है और फिडेलिटी है। MCQs नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्टैटिक करेक्टरिस्टिक ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स? फिडेलिटी, टाइम लैग, डायनामिक एरर, रिप्रोड्यूसिबिलिटी। The correct answer is D, reproducibility। So what is reproducibility? Reproducibility is defined as the degree of closeness by which a given value can be repeatedly measured। Perfect reproducibility signifies that the given reading that are taken for an input do not vary with time। अगर किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट हो रहा है और मेजरमेंट के बाद अगर वैल्यू कॉन्टीन्यूसली एक जैसी आए, मतलब बार बार रिपीट कर रही है और तब्दीली नहीं आ रही है, तो उसे हम रिप्रोड्यूसिबिलिटी कहते हैं। MCQs नंबर 2, which of the following is a dynamic characteristic of instrument? Time lag, drift, reproducibility, span। Correct answer is option A, time lag। So what is time lag? Every system requires its own time to respond to the change in input। This time is called time lag। Simply we can say that टाइम लैग मीन्स रिस्पॉन्स डिले। जब मिसाल के तौर पर जब कंप्यूटर को ऑन करें और वो ऑन होने में टाइम लगाए, तो इसको हम टाइम लैग कहते हैं। यानी कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जो परफॉर्म होने में टाइम लगाए, तो इसको हम टाइम लैग कहते हैं। MCQs नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज़ अनडिज़ायरेबल? एक्यूरेसी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, sensitivity, drift। Correct answer is option D, drift। So what is drift? The drift is defined as the gradual shift in the indication over a period of time where in the input variable does not change। Drift may be caused because of environmental factors like stray electric field, stray magnetic field, thermal EMF, change in temperature, mechanical वाइब्रेशंस एक्सेट्रा। अगर किसी डिवाइस में हम इनपुट तब्दील नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी आउटपुट में तब्दीली आए, तो इसे हम ड्रिफ्ट कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज़ डिज़ायरेबल? स्टैटिक एरर, ड्रिफ्ट, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, डेड जोन,
द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी। ये हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। MCQs नंबर 5, एक्यूरेसी ऑफ इन इंस्ट्रूमेंट इज़ जज्ड इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट, डेड जोन, static error. The correct answer is option C, static error. So what is static error? It is the deviation of the true value from the desired value. यानी कि हमारे पास जो measured value है वो हमारे पास true value से कितनी उसकी deviation है। What is accuracy? It is the degree of closeness with which an instrument reading approaches the true value of the quantity being measured. The accuracy of a measurement indicates the nearness to the actual या true value of the quantity. Accuracy actually हमारे पास true value के करीब जितनी हमारे पास measured value होगी तो वो जो quantity हमारे पास होगी वो हमारे पास उतनी accurate होगी। जितनी हमारे पास जो measured value है वो हमारे पास true value से दूर होगी, यानी कि इनके दरमियान जो डिफरेंस या डिविएशन जो होगा वो ज़्यादा होगा तो हमारे पास क्या होगा, एक्यूरेसी कम होगी। MCQs नंबर 6 to 10 हमारे पास एलिमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम से रिलेटेड हैं। MCQs नंबर 6, द बल्ब ऑफ अ वेपर प्रेशर थर्मोमीटर इज़ primary element, secondary element, manipulating element, functioning element. The correct answer is option A, primary element. So what is primary element? It is that part of the instrument that first comes in contact with the measured medium and receives energy from it and convert it into measurable units. For example, bulb act as the primary element in the thermometer. It takes energy from matter and displays it in the form of displacement of fluid. अगर हम वेपर प्रेशर थर्मोमीटर की बात करें तो इसका जो बल्ब है ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी एलिमेंट है, क्योंकि यही जो बल्ब है सबसे पहले एनर्जी रिसीव करता है मैटर से और इसे शो करता है इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट। MCQs number 7, the Burden tube of a vapor pressure thermometer is a primary element, secondary element, manipulating element, functioning element. Correct answer is option B, secondary element. So what is secondary element? The secondary element converts the energy received by the primary element into a measurable unit of the instrument. That is, it converts the condition generated by the primary element into condition useful for the function of the instrument. As the spring converts the primary energy of a fluid into the displacement of the link. यहाँ पे जो हमारे पास बर्डन ट्यूब है वेपर प्रेशर थर्मोमीटर का, ये बल्ब ऑफ वेपर प्रेशर थर्मोमीटर से एनर्जी को रिसीव करता है और उसे ट्रांसफ़र करता है लिंक के पास। तो ये हमारे पास क्या हुआ, सेकेंडरी एलिमेंट हुआ। MCQs नंबर 8, द करेक्टर प्लेट ऑफ अ वेपर प्रेशर थर्मोमीटर इज़ primary element, secondary element, functioning element, manipulating element. The correct option is option D, manipulating element. So what is manipulating element? That part gives work to the condition generated by the secondary element like comb in the pressure spring. वेपर प्रेशर थर्मोमीटर में वो वाला पार्ट जो कि कॉम्ब यानी कंघी की तरह लग रहा है वो हमारे पास क्या कहलाता है, मैनिपुलेटिंग एलिमेंट कहलाता है। MCQs number 9, the pointer of a vapor pressure thermometer is a primary element, secondary element, manipulating element, functioning element. The correct option is option D, functioning element. So what is functioning element? The function element displays simple transmission, signaling, registering, indicating and reading. For example, pointer and scale works functionally in a thermometer. पॉइंटर और स्केल जो है वेपर प्रेशर थर्मोमीटर का वो हमारे पास क्या चीज़ है, फंक्शनिंग एलिमेंट है। MCQs नंबर 10, थर्मोकपल इन अ टेम्परेचर रिकॉर्डर इज़ एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी एलिमेंट, सेकेंडरी एलिमेंट, मैनिपुलेटिंग एलिमेंट, फंक्शनिंग एलिमेंट। द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए, प्राइमरी एलिमेंट। ये थी आज की हमारी वीडियो। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इन MCQs की समझ आपको अच्छी तरह से आ चुकी होगी। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।